Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the podcast by Wajid Khan. और हम ये सीरीज़ ऑफ पॉडकास्ट है जो एक्चुअली जो आईटी से रिलेटेड सब्जेक्ट है. ख़ासकर आई विल टेक एज ए आर्किटेक्चर एज ए टॉप लेवल and then we will drill down on the coding level also, but I'm taking the top to bottom approach. So actually when you practically design the complex application, then you really see the benefit of the software architecture. If you want to write a very maintainable code or reliable and efficient, and also that there is a number of team member on the teams, and then you have to take care of the one big complex distributed app. So you have to take care of a lot about the architectures. As a team lead or as a IT manager, you have to working a system that's reliable, efficient, maintainable, and available and usable, and it's maintainable, and you can understand the code if the new team member will come. And also the other complexities are if you see the horizontal domains, then if your team member using multiple technologies and you taking care of that one, that's another actually a variable in that. And other thing is when you have a different technologies, that's another stack that you have to take care of that. So हम actually बहुत सिंपल वे से हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को देखेंगे. ऑल्दो मैंने इसमें ऑलरेडी एक ब्लॉग भी लिखा है, लेकिन मैं समझ रहा था कि जो पॉडकास्ट है उसमें हम इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तौर पे एक्सप्लेन कर पाएंगे. और चूँकि वहाँ बहुत ही समराइज मैंने दे दिया वो पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक बीइंग ए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट or software engineer you have to consider when you are leading a big teams, you are IT managers or application lead, then you have to take care of the applications architecture very seriously. Though there is a number of definition of that, I selected two of them one, but seriously there's number of things, but when you see the concept and the fundamental of that one, then you understand it more. As a software engineer, you have to like a building architecture. As a software engineer architecture, you have to take care of everything. You have to mix the art and science to design the software architectures. And actually if you talk about the architecture, you are not really concerned at this stage about the implementation details, about the coding. That's come later, but I think in that stage you have to make a number of core decisions, because if you not make it now and you go to the implementation and something you need to change, the change is very very costly. So वो चेंज बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी अगर आप उस वक्त ये डिसीजन लेते हैं बजाय इसके कि इस वक्त लेते हैं. और बहुत सारे कॉन्स्टेंट होते हैं, प्रायोरिटीज़ होती हैं. आपको कस्टमर को या आपका जो क्लाइंट है उसको देखना होता है कि प्रोडक्ट टाइम टू मार्केट कितनी देर में हमने देनी है, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, कॉस्ट क्या है. ये सारी चीज़ें भी एज ए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट आपको ज़हन में रखनी होती हैं. तो ये यानी एक तो जो बुनियादी बात है वो ये है कि हम जो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर यू हैव ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. दो जो बिल्डिंग आर्किटेक्चर वो उसमें जो ब्रिक्स होती हैं या ईंटें होती हैं वो उसका एक ब्लॉक होता है जिस पे वो ये बनाता है. लेकिन एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके पास वो कोड होगा, लेकिन आपने बताना है कि किस तरतीब से वो कोड लिखना है या कैसे रखना है ताकि एक ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग बने जो मेंटेनेबल भी हो और सारे फंक्शन भी हो और रिलायबल भी हो और अवेलेबल भी हो और एफिशिएंट भी हो. तो
इससे जुड़े और बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के साथ फिर क्लाउड कंप्यूटिंग है और बहुत सारी चीज़ें। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इस सीरीज़ में हम ओवरव्यू लेंगे आर्किटेक्चर का। इंशाल्लाह कमिंग पॉडकास्ट में हम देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और उस कंटेक्स्ट में हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को कैसे देखते हैं। ऑल दो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ऑल दो ऑन प्रेम है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन प्रेमिसेस है या क्लाउड पे है, इट्स एप्लीकेबल इन बोथ वे। सो but we will see the cloud because that's something is coming, and in the future people using cloud as a utility। यानी जैसे हम बिजली को इस्तेमाल करते हैं या गैस को इस्तेमाल करते हैं, तो क्लाउड भी ऐसे होगा कि यू हैव टू पे समथिंग एंड बिल इज़ कमिंग मंथली, एंड जो कुछ आप यूज़ करेंगे दैट्स इट। सो यू हैव टू नॉट बाय समथिंग अप फ्रंट, यू डोंट हैव एनी कैपिटल कॉस्ट। दिस कैपिटल एंड ऑपरेशन कॉस्ट, दिस इज अनदर थिंग। Inshallah we will discuss in that when we go into the details about the cloud things, but let's now stick to the software architectures। दो कंसेप्ट और फंडामेंटल में क्या है कि हम जो हमारा फोकस होता है इस वक्त एज ए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर पे होता है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द डिटेल्स, दोज थिंग्स विल कम बट इन लेटर स्टेज व्हेन वी आर ऑन एप्लीकेशन लेयर्स। सो and you have make a very core decision to make the high quality software। So this is really important. If you are designing a good quality software, then you have to make the decision at that levels, what kind of pattern or architecture you are going to use। And I think third important thing is to identify the expensive choices that will come in the later stages। For example, if you think your customer is saying them, I need this product and out in 6 months and I need all these feature, then you maybe sacrifice the feature and then you put the product on time on that one, and you have to do the trade-off। So this is really important as being a software architecture, you have to do that। But when you're doing the software architecture, the first thing when you interact with the client, there's the requirements। So client tells you what is my requirement। For example, in my today podcast we will see the restaurant as a example। Any customer in my home city, they come to me, for example Chaudhry Atasab, they come to me and they want something like a restaurant। So वो मुझे कहेंगे कि मैं कैसे जो मीनू है या इन्वेंट्री है, जो उनकी प्रोडक्ट्स होगी, एक्चुअली जो उनके खाने होंगे, मीनू होगा, प्रोडक्ट्स होंगी एक तरह से, मैं उनको सर्च कैसे करूँ। या उसमें दोनों इंटरफेस हो सकते हैं, क्लाइंट साइड का भी एज बीइंग ए होटल मैनेजर यू शुड एडमिन इंटरफेस, जहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी इन्वेंट्री लेवल क्या है, या वो कहे मैं अपनी प्रोडक्ट को कैसे मैनेज कर सकता हूँ, कुछ नए डिशेस लेके आ रहा हूँ और मैं उनको कैसे लाइव करूँ so people can buy it। और डेफिनेटली लोग उसमें ऑर्डर भी प्लेस कर सकें, ठीक है, और फिर मैं ऑर्डर फुलफिलमेंट भी कर सकूं, यानी लोगों को खाना डिलीवरी जो है वो फुलफिलमेंट भी हो सके। एंड देन व्हेन देयर इज़ ए फुलफिलमेंट, देन यू हैव टू टेकिंग केयर ऑफ द पेमेंट्स एंड देन यू हैव टू अपडेट योर इन्वेंट्रीज एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और ये है कि क्लाइंट I know about what he need, at least he know what kind of functionality I need। So all these are a functional requirement, we call it what the system should do, yani that's the functional requirements। लेकिन एज ए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट आपको न सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट को देखना होता है बल्कि ये भी देखना होता है कि उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है। मिसाल के तौर पे सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए, यू डिज़ाइन ए वेरी गुड प्रोडक्ट, यू डिज़ाइन ए वेरी गुड रेस्टोरेंट वेबसाइट, बट दैट्स वेबसाइट इज़ नॉट अवेलेबल 24/7, कभी क्रैश हो जाती है, कुछ हो जाता है, it's not reliable, so user experience is not good, so people are avoiding to come to your restaurant website instead। अगर आपका कोई competitor है, they will go there। So non-functional requirement are equally important। अब ये जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ये एक तरह से
हमें ये बताती हैं कि सिस्टम को कैसे बिहेव करना चाहिए. सो सिस्टम कैसे बिहेव करे और फंक्शन रिक्वायरमेंट सिस्टम को क्या करना चाहिए, व्हाट सिस्टम शुड डू. तो रिलायबिलिटी के अलावा वो उसमें एफिशिएंट भी हो, लेटेंसी बहुत कम हो. ये नहीं कि आप होम पेज खो रहे हैं और ये पेज खुल रहा है. सो इफ़ इट्स नॉट गुड एक्सपीरियंस, सो यू आल्सो लूजिंग योर कस्टमर्स. सो जो efficiency, that's equally important, and that's non-function requirements. स्केलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है. आपका रेस्टोरेंट बहुत मशहूर हो जाता है और उसके बाद बहुत सारे लोग आ जाते हैं, 10,000 15,000 लोग ख़रीदने के लिए आ जाते हैं. सो यू शुड बी स्केलेबल टू द मिलियन ऑफ यूजर्स. सो वेयर क्लाउड विल कम दैट यू कैन स्केल अप and maintainable also. If you are going to take care of the website, then you should write the code in a way, so in a modular way, so you can maintain that one. Okay, these are the non-functional requirement. And now we will move. अब हम चलते हैं. फंक्शन रिक्वायरमेंट हमने देखी, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट देखी. फिर कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं जो कि आपके जो चॉइसेस हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो आप कर रहे हैं उसको अफेक्ट करती हैं. कुछ ऐसी लिमिट्स हैं जो यू हैव टू टेक केयर ऑफ. अपार्ट फ्रॉम द फंक्शनल नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट, you will have the system restriction also as well. So मिसाल के तौर पे लीगल कंप्लाइंस हैं. अगर मैं अपने मुल्क में हूँ और वहाँ पे कोई लीगली मुझे कुछ चीज़ें हैं जो करनी हैं, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ दैट. और अगर कस्टमर मुझे कहता है कि मुझे 6 महीने में ये रेस्टोरेंट की वेबसाइट चाहिए, दैट्स अनदर कॉन्स्टेंट. देन आई हैव टू ट्रेड आउट व्हाट फीचर आई एम गोइंग टू डिलीवर एंड इन दिस टाइम फ्रेम. सो यू हैव टू कंसिडर दैट. अगर कुछ स्टैंडर्ड है, सो somebody when you are designing the restaurant, tomorrow somebody make the mobile app on that, and then there's you have to write the code in the standard way, so you can expose the APIs. और द कॉस्ट एंड एनीथिंग, कॉस्ट भी हो सकती है आपके कांस्टेंट हो सकता है. क्लाइंट कहता है कि मेरे पास बस इतने पैसे इसमें मुझे बना दो. सो यू हैव नाउ ए कॉस्ट इशू आल्सो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. एंड फीचर आल्सो, सो it should be a working product. Otherwise, if there is a no feature is not usable, then what's the point of the whole product? I mean, for example, कोई कहता है कि अभी यूज़र जब मेरे रेस्टोरेंट से बाय कर ले और उसके बाद वो ऑर्डर को रिव्यू भी करे कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो हम ये कहते हैं कि आपकी कास्ट चूँकि कम है और हमने ये प्रोडक्ट डिलीवर करनी है विद इन 3 months 6 months like that, and then we think this review things, the customer review feature, we can postpone it to the next iteration or something like that in the next variant maybe. और फिर जब आपको फंक्शन नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट और रिस्ट्रिक्शन का पता चलता है, तो आपको फिर प्रायोरिटाइज करना है व्हाट द सिस्टम को, क्या मेरी प्रायोरिटी है, क्या चीज़ें कन्फ्लिक्ट कर रही हैं रिक्वायरमेंट और रिस्ट्रिक्शन के दरमियान, और क्या आप कुछ रिक्वायरमेंट को आप स्ट्रिप ऑफ कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाए, मैक में भी जाए, उस विंडोज़ में भी जाए और लिनक्स में भी जाए, then you can say, okay, we skip at this stage, we only deploy that to the window system, and later we import it to the Mac OS, because there is a much wide user in the market using the window, and there is a less Mac in my city or whatever your scope of your work is. So then you can trade off and take the customer approval also at the same time. So in this way you define the priority also. I think आपके पास जब ये काम हो जाता है, you now understand. और एक और चीज़ बहुत आम है, जब भी आप रिक्वायरमेंट ख़ासकर गैदर कर रहे हों और आप रिस्ट्रिक्शन को भी देख रहे हों, डोंट ओवर इंजीनियर समथिंग, ओवर थिंक और समथिंग. एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचना. कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि अभी अर्ली स्टेज पे आपको कम इन्फॉर्मेशन होती है, आपको पूरा कंटेक्स्ट नहीं होता उस चीज़ का, बट व्हेन यू गो डाउन दैन इन द प्रोजेक्ट timeline,
then you have more understanding of that one. So sometimes thing make sense when you are actually involved, because sometime और भी चीज़ें हैं मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि sometime आपका कस्टमर अगर वेल इन्फॉर्म है तो आपको वो फॉर्मल रिक्वायरमेंट देता है, बट if that's not because this guy is not technical and something like that, और वो आपको सही तौर पे रिक्वायरमेंट डिफाइन नहीं कर सकता, तो then you have to start with something, make the initial feature for that one and then show to the customer, and then you will get यानी more farmer requirements or understanding of the project. So overthink करना भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा ओवर इंजीनियर भी नहीं करना, कुछ चीज़ों का कंटेक्स्ट उस वक्त आता है जब आप डाउन प्रोजेक्ट में जाते हैं. तो अब एक दफ़ा ये सारी चीज़ें हो गई, आपने अपनी प्रायोरिटी डिफाइन कर दी, आपको रिस्ट्रिक्शन का पता चल गया, और जो obvious थिंग है, जो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं उस पर काम करें, जो अभी तक थोड़ी सी obvious नहीं है, then you will get more context at later stage, something like that. So now it is time to design the architecture. So अब आप इस आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे. If you see there is a multiple architecture pattern in the market, you can adopt anyone you think, but sometime it depends what kind of product you are going to develop. Okay, and then you can choose. For example, if it's operating system, making microkernel pattern is fine. But there is a number of patterns. I'm just mentioning here 3 of them. This layered pattern, architecture pattern. So it's composed of 7 different layers, and that function together in the single unit of software. बहुत सारी लेयर हैं जो एक प्रोडक्ट के तौर पे काम करती हैं कोलेक्टिवली. इवेंट ड्रिवन भी है जिसमें ट्रिगर होता है, कम्युनिकेट होता है, और सर्विसेज मोस्टली डीकपल्ड होती हैं, लेकिन उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो ट्रिगर और इवेंट से होती है. आल्सो जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न है, दैट्स नाउ बिकमिंग रियली इंपॉर्टेंट इन द लेटर स्टेजेस, बिकॉज पीपल वांट टू मेक द मॉड्यूलर अप्रोच एंड दे वांट द मॉड्यूल्स should be more independent. For example, the UI layer should be more independent than the business logic layers. So that's really important, the separation of concern. So in the microkernel, for example, architecture pattern, we take care of the core system with plug-in modules. There is core functionality. We make that module as a core. We know that, and then you plug in different modules with each different singular function. सो जब आप एक दफ़ा आपको फंक्शन रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, रिस्ट्रिक्शन और प्रायोरिटीज़ का पता चल गया, तो अब आप एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर वो डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे. तो जो इनमें मेरा फेवरेट है वो लेयर्ड आर्किटेक्चर पैटर्न है. आई विल डिस्कस दैट. सो इसमें ये है कि जो आपकी बॉटम लेयर है, जैसे नेटवर्किंग में OSI मॉडल है, इसी तरह की डेवलपमेंट में ये कि आपकी सबसे जो बॉटम लेयर है मोस्टली डेटाबेस लेयर होती है, जो एक्चुअली स्टोर होता है, या आपकी रिपोजिटरी भी उसे लोग कहते हैं, या जहाँ पे आप अपना डाटा स्टोर करते हैं. इट कैन बी एनीथिंग. इट कुड बी ए टेक्सचुअल फाइल, इट कुड बी ए क्लाउड स्टोरेज, it could be a BLab storage, it could be a database, and then database implementation like Oracle, SQL Server, like that. You can think of like that. That's database layer where you exactly store the data, and then above that there is a data access layer. I mostly use the entity framework as there, but people can use the repository pattern also here at the data access layer, because then the database layer become the independent. For example, if somebody say you want to change the store from BLab storage to the DBMS like Oracle or SQL Server, then there is it's easy to change actually. And then you design a business logic layer. So all your business actually, the logic will go in your business logic layer, and the top of it is the user interface layer, mostly the presentation layer where you write your views mostly. So the advantage is tomorrow if you want to change if you design the software for one platforms, and tomorrow you want to port to another platform, so it's very easy if you have a business logic layer separate from the presentation or UI layer, user interface layer.
So this is how the pattern works. So thank you very much on that. मेरे ख्याल में ये पॉडकास्ट जो है, इससे पहले जो मेरा बी लॉग है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का, वो आप पढ़ लेंगे और उसके बाद ये पॉडकास्ट जब आप सुनेंगे तो आपको वो कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट सुनने का, और इंशाल्लाह हम फिर भी नई एपिसोड के साथ मिलते रहेंगे. और इस वक्त इजाज़त दीजिए, और अल्लाह हाफिज़.